आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दो प्रेस, क्योंकि ऐसे ही कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलो शुरू करते हैं। यूएई के अबू धाबी में होने जा रहा है भव्य हिंदू मंदिर, अभी तक का एकमेव हिंदू मंदिर। इनमें लगभग 2000 इंडियन वर्कर शामिल है। 30.9 एकड़ में फैला हुआ यह हिंदू मंदिर अभी तक का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। यह मंदिर अबू धाबी में अर्रेहा में होने वाला है। स्वामी नारायण मंदिर होने जा रहा है भारत का गौरवशाली इतिहास। इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से पत्थर का होने वाला है। तो चलो हम देखते हैं फाउंडर की तरफ वो क्या कहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो चलो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। This temple transcends dividers. This temple is a true symbol of harmony because we thank His Royal Highness, our Crown Prince, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, for gifting this 13.5 acres of land completely in charity. And I can just assure you that on behalf of the embassy and the consulate, and of course this wonderful community of ours, many of you who are here today and many of you who are not, we will continue supporting you in every which way and working with the UAE government to make sure that this is a reality within the time that you plan. And frankly, just your vision and planning is something which is greatly impressive, and we will be with you through this journey. Thank you very much. Swamiji, religious leaders, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. More importantly, thank you for coming all the way from India to our country, to your country, and finding this place as your home. And religion is a key factor to feel. आपने देखा कि प्रोजेक्ट फाउंडर इस प्रोजेक्ट में आने के लिए इंडियन वर्कर्स को वेलकम कर रहे हैं। इंडियन वर्कर्स की इसमें हेल्प ली जा रही है। इसके लिए हमें इसका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए और इस कंस्ट्रक्शन का काम जल्दी से जल्दी समापन हो जाए, यही आशा करते हैं। No ferrous material. It will be the locking pins will be in copper, and all other will be stonework. So this kind of a structure is being now has been traditionally done by our various Sompuras who do the stonework. But now we are trying to involve latest technology, putting sensors in the concrete by which we will get the temperature variance, the settlement, and as well as the stresses in the concrete. This and even in the stonework. This we'll be able to compare with the scientific calculations, and this so that we can come to understand how Indian system of stone building could survive thousands of years and how we can achieve that in the modern world. When we started this project, we started really surprised because before reaching the excavation level itself, we reached high rock. I feel this is the first time in the GCC. More than 15 years I am working in GCC, and first time I find such a good foundation within such limit. અને આ ફાઉન્ડેશન આપણે બોક્સ ફાઉન્ડેશન તરીકે એટલે નીચે રાફ્ટ કરીશું અને એના ઉપર પછી અબાઉટ 14 ફૂટ જેટલી બધી કોન્ક્રીટની દિવાલો આવશે અને એના ઉપર પાછું ફરીથી એક રાફ્ટ આવશે એટલે 15 ફૂટનું આખું બોક્સ ફાઉન્ડેશન આપણે કરી રહ્યા છીએ કે જે ટોટલી અનરેન્ફોર્સ્ડ સ્ટ્રક્ચર હશે અને આપણે જે એન્શિયન્ટ જે આપણી શિલ્પશાસ્ત્ર પ્રમાણે નોન ફેરસ એટલે કે ફેરસ મેટલનો કોઈ પણ યુઝ કર્યા વગર આપણે આ આખું આ ફાઉન્ડેશન ડિઝાઇન કરી રહ્યા છીએ અને એ 15 ફૂટની ઉપરથી પછી આપણું સ્ટોન વર્ક બધું ચાલુ થશે. બીજી આની ખાસ એવી ખાસિયત છે કે આપણે જે અત્યારે કોન્ક્રીટ કરી રહ્યા છીએ એ હાઈ વોલ્યુમ ફ્લાયસ કોન્ક્રીટથી આપણે આખું ફાઉન્ડેશન અત્યારે ભરી રહ્યા છીએ એટલે કે જે સિમેન્ટ હોય એના 55% જેટલું સિમેન્ટ આપણે ફ્લાયસથી આપણે રિપ્લેસ કરી રહ્યા છીએ કે જે વેરી એન્વાયરમેન્ટલ ફ્રેન્ડલી અને કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ એનાથી ઘણી બધી ઓછી થઈ જાય છે અને ગ્રીન બિલ્ડિંગ તરીકે પણ આનું આપણને ખૂબ સારામાં સારી રીતના યુઝ આપણે કરી રહ્યા છીએ. ટોટલ 3 પ્લાન્ટમાંથી આ કોન્ક્રીટ આવી રહ્યું છે
અને 80 ટ્રક એવરેજ 9 ક્યુબિક મીટર અથવા તો 10 ક્યુબિક મીટરની કેપેસિટીવાળી ટ્રક્સ યુઝ કરવામાં આવી છે. લગભગ 325થી 350 ટ્રક્સ આ કાંકરીટનો ફાउंडेशन કરવામાં इस मंदिर में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों के लिए बड़ी बड़ी हॉल की गई है. यहाँ सभी तरह की व्यवस्था की गई है. बच्चों के लिए खेलने का गार्डन, मॉल, शॉपिंग मॉल्स, सभी तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है. तो हमें यहाँ देखना है कि यहाँ इस आर्किटेक्चर में कैसा दिखता है यह भव्य मंदिर. यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है. लगभग 12,000 से भी ज़्यादा मोटर्स यहाँ पार्किंग की व्यवस्था यहाँ की गई है. और इस परिसर में 2 हेलीपैड भी दिए हुए हैं. तो हमें बस यह देखना है कि इस मंदिर का समापन कब होता है. तो आपको यह इंफॉर्मेशन कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट में बताइएगा. ऐसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहेंगी. बस चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दो प्रेस ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले. तो धन्यवाद दोस्तों.